Good morning students. Welcome to Bindu Dhadwal Chemistry lessons. आज हम हिमाचल प्रदेश बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर 24-25 सेशन का सॉल्व करेंगे. क्लास 12 केमिस्ट्री. So let us begin. Which of the following factors does not affect the solubility of a solid solute in a liquid solvent? So answer is pressure. In an electrochemical cell, reduction takes place at cathode. With increase in temperature, the conductivity of dash increases. तो metals की तो decrease करती है और wood insulator है, so answer is silicon. The standard electrode potential of a half cell is measured under standard conditions which include 1 molar concentration of solution, temperature should be 298 Kelvin and pressure should be 1 atmosphere. So option A is correct answer. 0.1 गलत है, 273 गलत है और 0.1 concentration गलत है. Option A is the correct answer. The most basic among the following is, so aromatic compounds are less basic or out of aliphatic. जितना बड़ा alkyl group होगा उतना ही basic character ज़्यादा होगा. So option C, ethylamine is the correct answer. The number of unpaired electrons in Fe3 plus is, so iron is 26 atomic number, तो iron atom की configuration होती है 3d6 4s2, लेकिन +3 state में ये 3 electrons lose कर जाएगा और as a result 3d में 5 electrons होंगे, तो unpaired electrons भी 5 होंगे. So answer is option C, 5. In the chlorination of benzene, the role of anhydrous aluminum chloride is to act as a catalyst. Which of the following is the correct IUPAC name for CH3CHO? तो 2 कार्बन का कंपाउंड है तो it AN primary suffix, or because CHO is the functional group, so al, Al. So option A, ethanol is the correct answer. Aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions due to the presence of electron deficient carbonyl carbon. Initial concentration in a first order reaction is 32 mole per liter and T half is 10 minutes. So using T half equation, T half is equal to 0.693 upon K, हम K निकाल लेंगे और concentration को first order equation को यूज करके, इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं. सो लेट अस सॉल्व. 0.693 अपॉन T हाफ becomes 0.0693. देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है K is equal to 2.303 upon T log of concentration, initial concentration upon final concentration. So ये 9030, this is equal to log 32 upon concentration of A. तो antilog लेंगे तो antilog of 0.9030 हो जाएगा 7.998, which is equal to antilog of log कैंसिल हो गया और 32 upon A आ गया. So A will be 32 upon 7.998, which is equal to 4. So answer is 4. Option A is the correct answer. Assertion A. Carboxylic acids have higher boiling points than aldehydes and ketones of similar molecular weight. This is correct. Carboxylic acids from
strong hydrogen bonds with themselves, leading to the formation of dimers. This is also correct. So, out of the 4 options, both assertion A and reason R are true, and reason R is correct. Explanation no. Both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A is the correct answer. Next question. Phenol is more acidic than ethanol. Correct. Phenoxide ion formed after the loss of proton from phenol is stabilized by resonance, whereas the ethoxide ion is not. That is true. So both assertion A and reason R are correct, and reason R is the correct explanation of assertion A is the correct choice. Then calculate E cell for given cell if E0 cell is 2.7 volt and cell is magnesium dipped in magnesium ions with concentration 0.001 mole, and copper is dipped in copper ions, concentration 0.001 mole. तो नर्न्स इक्वेशन है हमारे पास E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT upon NF log concentration of magnesium ions upon copper ion. Anode ions, anode is magnesium, cathode is copper. So 10 raised to power minus 3 upon 10 raised to power minus 4 इनकी concentration is given. तो N की value क्योंकि reaction is magnesium gives 2 electrons, so N is 2. Putting the values in the equation and solving, E cell is equal to 2.69045. Next question. Derive integrated rate equation for first order reaction. So for a first order reaction, the reactant A changes to product and rate law equation is rate is that is minus change in concentration of reactant with time is equal to K into initial concentration raised to power 1. So K A naught. अब dt को इधर ले गए और A naught को इधर ले गए तो we get minus dA upon A is equal to K dt या dA upon A is equal to minus K dt. अब integrating both sides of the equations we get integral of dA upon A is equal to minus integral of K dt is equal, दोनों का इंटेग्रल ऑफ डी ए अपॉन ए होता है एल एन ए और इसका इंटेग्रल होगा माइनस के टी प्लस आई. अब आई इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसको निकालने के लिए हम कंडीशन पुट करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन व्हेन टी इज इक्वल टू 0. उस टाइम पे टी 0 है और एल एन ए नॉट होगा. तो सब्स्टिट्यूटिंग हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ln A naught is equal to minus K into 0 plus I. ये 0 हो गया तो I is equal to ln A naught आ गया. Substituting the value of I in this equation we get ln A is equal to minus KT plus ln A naught और E naught को इधर ले गए तो ln A naught minus ln A is equal to KT. KT is equal to ln A naught upon A. K is equal to 2.3 नेचुरल लॉ को टू द बेस 10 किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया. K is equal to 2.303 upon T log of A naught upon A. This is the integrated rate equation for first order reaction. Question number 15. What is meant by chelate effects? Explain with an example. So अगर हमारा chelating ligand होता है तो वो stable कर देता है. So chelate effect is the increase in stability of a metal complex when a polydentate ligand attaches to a metal ion forming a
ring-like structure. The complex is more stable than if a monodentate ligand is attached to the metal ion. For example, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये क्लोज रिंग कंपाउंड बनाता है और स्टेबिलिटी बढ़ाता है. सो ट्राई इथेन 1,2-diamine nickel is more stable than hexaamine nickel. Explain why ethers are relatively unreactive compared to alcohols. Ethers are relatively unreactive as compared to alcohols because they lack the hydroxyl group, which is reactive site in alcohols. In ethers, the functional group is ROR, which does not have any active site. अब यहाँ optional question है, explain a test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. So answer is Leucas test. जब हम इसको Leucas reagent यानी a mixture of concentrated solution of anhydrous zinc chloride and HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं at room temperature, तो अल्काइल हेलाइड्स बनते हैं. टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म क्लाउडी वाइट प्रेसिपिटेट्स, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं ये आफ्टर अ फ्यू मिनट्स रिएक्ट करते हैं और प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर विद द ल्यूकास रिएजेंट. सो जहाँ टर्बिडिटी इमीडिएटली आई वो टर्शरी अल्कोहल है, जहाँ आफ्टर फ्यू मिनट्स आई वो सेकेंडरी, और जहाँ नहीं आई वो प्राइमरी अल्कोहल्स है. Aldehydes are more reactive than ketones. Why? So answer is because of steric hindrance. Aldehydes are less hindered than ketones because a hydrogen atom is present and it is smaller than the organic group. यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको अटैक करने में ये ज़्यादा आसान होता है, जबकि यहाँ दो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स हैं तो अटैक करना मुश्किल होता है. स्टेरिक इफेक्ट की वजह से एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. देन कार्बोनिल, कार्बन पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये कम कंपनसेट होता है, कम न्यूट्रलाइज होता है, दो ग्रुप से ज़्यादा न्यूट्रलाइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है कीटोन्स में, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं. सो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू partial positive charge on carbon atom of carbonyl group. Inductive effect of two alkyl groups is more than one group, so aldehyde having one alkyl group is more reactive. Question number 18. Write a short note on Riemer-Tiemann reaction. So in Riemer-Tiemann reaction, an alkaline solution of phenol is refluxed with chloroform at 60 degrees centigrade, distilling off the excess of chloroform and acidifying the residual liquid with sulfuric acid. So phenol का जो H है वो क्लोरोफॉर्म की Cl के साथ HCl बना लेगा और CHCl2 यहाँ अटैच हो जाएगा. दो Cl ग्रुप NaOH के OH के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और इस तरह से एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप्स जो है वो वाटर बना के निकल जाते हैं और CHO ग्रुप अटैच हो जाता है एट ऑर्थो पोजिशन. सो ऑर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद NaCl एंड वाटर. Explain secondary structure of proteins. So secondary structure of protein is the three-dimensional arrangement of polypeptide backbone excluding the side chain. अब प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस जो है बताने वाला स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यही स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर फोल्ड होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द मेथड इन विच दे फोल्ड उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर. सो
most common secondary structure are alpha helices and beta sheets. Alpha helices, tight right-handed coils with each turn containing 36 amino acids, and beta sheets are formed when short regions of polypeptide lie side by side and are connected by hydrogen bonds. The neighboring chains can be parallel or anti-parallel. So, secondary structure is the primary fold of polypeptide chain and provides the basis for overall spatial structure of the protein. Now, question number 20. Give the IUPAC name of this compound K3AlC2O4 thrice. So, IUPAC नेम के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. पोटेशियम की हमेशा +1 होती है. एल्यूमिनियम की निकालने के लिए हम इसको X मान लेते हैं और तो हमारे पास आ जाएगा 3 × +1 + X प्लस ये ऑक्सलेट की -2 होता है तो 3 × -2 इज इक्वल टू, बाहर कोई चार्ज नहीं है तो 0. अब इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट X इज इक्वल टू +3. अब इसके नाम के लिए कैटायन का नाम पहले पोटेशियम, देन ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3 is the IUPAC name. Draw and discuss the structure of hexaamine cobalt 3 ion, mentioning hybridization and magnetic character using valence bond theory. So cobalt is the central atom. इसका atomic number होता है 27. configuration हो जाएगी argon 18 3d7 4s2. अब oxidation state इस compound की निकालने के लिए X +6 × 0 is equal to +3 और सॉल्व करके आया X is equal to +3. सो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2 4s से, 1 3d से, तो 3d6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है 3d में हमने इस तरह से प्लेस कर दिए. बट अमीन is a strong field ligand, so it causes pairing and makes available 2d orbitals for D2sp3 hybridization. In the complex hexaamine cobalt 3, the 6 ammonia ligands will give 6 electron pairs to form 6 coordinate bonds in an octahedral geometry. So geometry of the compound is octahedral. टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये पेयरिंग हो गई, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0. सो मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी डायमैग्नेटिक. व्हाट इज अ फ्यूल सेल? Explain the working of hydrogen oxygen fuel cell. A fuel cell is a device that generates electricity through an electrochemical cell, not combustion. In a hydrogen oxygen fuel cell, hydrogen and oxygen combine to generate electricity, heat and water. So ये एक फ्यूल सेल में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सेंटर में है और ये एनोडिक कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन गैस. सो एट एनोड हाइड्रोजन जो है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव hydrogen ions. The protons pass through the porous electrolyte and electrons pass through the circuit. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्किट के थ्रू पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे जाके रिएक्ट करेंगे विद द OH ions provided by oxygen. तो at cathode, oxygen reacts with hydrogen ions and 4 electrons to form water. So cathode और एनोड का इस तरह से रिएक्शन होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है. How much electricity is required to obtain 4 gram of calcium by the electrolysis of calcium chloride? So reaction is calcium chloride
will get electrolyzed to produce calcium and chlorine. 1 mole of calcium is 40 grams. And to produce 1 mole, we need 2 moles of electron. Charge carried by 1 mole of electron is 1 Faraday. So charge carried by 2 mole of electron will be 2 Faraday. So to produce 1 mole, that is 40 gram of calcium, 2 Faraday charge is needed. To produce 1 gram, charge needed will be 2 into 96500 coulombs upon 40, and to produce 4 gram it will be 2 into 96500 upon 40 into 4. On solving, this comes out to be 19300 coulombs of electricity, that is 0.2 Faraday. Give the units of molar conductivity. So units are Siemens meter square mole inverse or Siemens centimeter square mole inverse. A first order reaction is 90% complete in 27 minutes. When will the same reaction be 99% complete under similar conditions? So K is 2.303 upon time 27, log of initial concentration 100 upon 100 minus x, 90% complete है तो 100 minus 90, this comes out to be 10. 100 upon 10 is 10, log 10 is 1, so K is 2.303 upon 27 into 1. Up for to calculate the time for 99% reaction, the equation will be T is equal to 2.303 upon K. K is 2.303 upon 27. Log 100 upon 1. Log 100 हो गया 2 और ये cancel out हो गया और T comes out to be 27 into 2, 54 minutes. Phenol is more acidic than ethanol. Why? This is because phenol, if it is to act as acid, will give phenoxide ion and proton. By resonance, phenoxide ion is more stable than phenol, so reaction will go in forward direction and it will act as acid. Whereas in ethanol, there is no such resonance, so ethoxide is not stabilized. So phenoxide is more stable than ethoxide. The negative charge on oxygen is stabilized by resonance and polarization via its aromaticity. Oxygen का negative charge इधर आता है और इलेक्ट्रॉन्स, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स इसको डीलोकलाइज करने में हेल्प करते हैं. तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ है, उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ आ जाएगा और इस तरह से रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है. Happens when propane 2-ol is heated with sulfuric acid at 443 Kelvin. So at 443 Kelvin, dehydration occurs and propene is formed along with water. Compare and contrast DNA and RNA in terms of their structure, function, and components. So DNA is a double-stranded structure and forms a double helix. RNA is single-stranded. DNA is much longer than RNA. RNA has less nucleotides. DNA contains deoxyribose sugar. RNA contains ribose sugar. DNA bases are adenine, thymine, guanine, and cytosine. RNA bases are adenine, uracil, guanine, and cytosine. फंक्शंस के टर्म्स में डीएनए जो है ये स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जबकि आरएनए जो है अमाइनो एसिड्स को कोड करके और प्रोटीन्स बनाता है या फिर इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन्स. गिव द chemical name of vitamin D. So answer is calciferol. There are two types of vitamin D's, D2 and D3. D2 is ergocalciferol and D3 is cholecalciferol. A researcher is studying the reactivity of different
haloalkanes and haloarenes with various reagents. She compares the reaction of chloromethane and chlorobenzene with the following reagents: aqueous sodium hydroxide, aqueous silver nitrate, and magnesium in dry ether. She observes distinct differences in reactivity between haloalkane and haloarenes. Answer the following questions. Write the chemical equation for the reaction of chloromethane with aqueous NaOH, and what is the type of this reaction. So the reaction is chloromethane plus NaOH will form methanol plus sodium chloride. It's a nucleophilic substitution reaction by molecular SN2. Explain why chlorobenzene does not undergo a similar reaction with aqueous NaOH as chloromethane. So it is because chlorobenzene is extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction due to following reasons. First reason is resonance effect. In haloarenes, the electron pair on halogen atom is in conjugation with pi electrons of the electrons of chlorine atom will be pulled, and these electrons move to this direction. यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, उसके बाद यहाँ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स पुल हुए तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसकी वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है. सो CCl बॉन्ड acquires a partial double bond character due to resonance. As a result, the bond cleavage in haloarenes is difficult and they are less reactive. Also, यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड in haloarene, the carbon atom is sp2 hybridized. It is more electronegative. Then the phenyl cation is unstable, and arenes are electron rich and will repel the incoming nucleophile. Question number 26. Write a short note on coupling reaction. So benzene diazonium chloride reacts with phenol, in which phenol molecule at its para position is coupled with the diazonium salt to form para-hydroxy benzene type, and this reaction is known as coupling reaction. ये benzene diazonium chloride है, ये phenol के para position of hydrogen के साथ ये HCl बना के निकल जाएगा, ये यहाँ से join होके diazobenzene para-hydroxy diazobenzene बनाएगा, which is an orange dye. और अगर डाइजोनियम क्लोराइड को हम एनालीन से रिएक्ट करवाएं, ये बेसिक मीडियम में होता है, एनालीन से रिएक्ट करवाएं तो एसिडिक मीडियम में पैरा अमाइनो बेंजीन की एनालीन की पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके HCl से इसके Cl से रिएक्ट करेगा और पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बनाएगा, विच इज़ अ येलो डाई. दोनों रिएक्शंस में ये जॉइन होते हैं और कपलिंग रिएक्शन होता है. What happens when propanamide is heated with bromine in alcoholic KOH? तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. प्रोपेनामाइड जो है एक कार्बन लूज करके अमीन बनाएगा, ये इसके दो Br के साथ दो HBr बनाते हैं जो KOH के साथ रिएक्ट करके KBr और वाटर बनाते हैं, और ये जो है CO is lost as carbon dioxide. So products formed are ethane, amine, then potassium bromide, potassium carbonate and water. How will you convert aniline to phenol? So we can convert aniline to phenol by the following two steps. First is formation of diazonium chloride. Aniline को हम ट्रीट करेंगे विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl एट आइस कोल्ड कंडीशन 273 to 78 केल्विन.
So we get benzene diazonium chloride. Second step में benzene diazonium chloride के साथ को water के साथ warm करते हैं and we get phenol. A compound X with molecular formula C3H7NO reacts with nitrous acid to form a compound Y, which gives a brisk effervescence with NaHCO3. On heating, X with dehydrating agent like P2O5 produces Z with pleasant odor. Identify X, Y, and Z and write chemical equations for reactions involved. So, X C3H7 NO means CH3CH2CONH2 जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा. So X is propanamide, Y is ethanoic acid, प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड NaHCO3 के साथ कंबाइन करके सोडियम प्रोपेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड के एफर्वेसेंस देता है. एंड प्रोपेनामाइड को जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं तो ये स्वीट स्मेलिंग प्रोपेन नाइट्राइल बनाता है. सो X is CH3CH2CONH2, Y is propanoic acid, Z is ethane propane nitrile, and these are the reactions. A solution is prepared by dissolving 5 grams of NaCl in 100 grams of water. Calculate molality of solution. So molality is mass upon molar mass and weight of solvent multiplied by 1000. So 5 upon 58.5 into 100 and ऊपर 1000 आ गया. Solve करने पे आंसर आ रहा है 50 upon 58.5 which is 0.855 molar. Give 4 differences between ideal and non-ideal solutions. So ideal solutions obey Raoult's law at all temperatures and pressures. Non-ideal solutions do not obey Raoult's law at all temperature and pressures. The interaction between unlike molecules are of the same order as between like molecules. Interaction between unlike molecule is different than interactions between similar molecules. There is no change in volume on mixing. There is change in volume on mixing. There is no change in enthalpy on mixing. Delta H mix is 0. Enthalpy change occurs on mixing. Delta H mix is not equal to 0. Why do transition elements form colored compounds? Transition elements form colored compounds because of presence of unpaired electrons and vacant d orbitals. Electrons jump from lower energy d orbitals to higher orbitals by absorbing energy of white light. When excited, electron return to lower level and give complementary color to the compound. What is lanthanide contraction? Give its cause. The overall decrease in atomic and ionic radii in lanthanoids is known as lanthanide contraction, and causes filling of electrons in F subshell of antipenultimate shell. It has very poor shielding effect, and so effective nuclear charge increases and size decreases. Why do transition elements show variable oxidation states? Because their valence electrons are in 2 different sets of orbitals, n-1d and ns, with small energy difference between them. They can lose or gain electrons to form ions with different charges. What happens when acidified KMnO4 reacts with ferrous sulfate? Ferrous sulfate gets oxidized to ferric sulfate. Reaction is 2 KMnO4 plus 10 FeSO4 plus 8, H2SO4 gives 5, ferric sulfate plus 2, MnSO4 plus 8, water plus K2SO4. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.